Welcome to Super Coaching, Regulatory Bodies YouTube channel by Testbook. My name is Madhav Sir. मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं फाइनेंस करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं ये सेशन लाइव कंडक्ट किया जाता है ऑन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एंड वी कवर ऑल द इंपॉर्टेंट फाइनेंस करंट अफेयर्स। जैसा कि आज हम डिस्कस करेंगे 28 ऑफ फरवरी से लेकर 2 ऑफ मार्च के फाइनेंस करंट अफेयर्स को, और हम फोकस करेंगे आरबीआई द्वारा प्रेजेंट की गई इन द रीसेंट टाइम्स नोटिफिकेशंस, आरबीआई प्रेस रिलीज, RBI circulars, even RBI bulletins and the RBI publications. उसके साथ साथ we also discuss the finance, or I would say the general banking related current affairs which are important for your phase 1 examination as well. So before I start the discussion, may I have a reply in the comment section that I'm audible, visible, everything is fine? Just give me a thumbs up. Good evening Garima. I would request everyone to quickly reply in the comment section that yes, I'm audible, visible, everything is fine, so that we can begin the discussion without any further delay. I'm just waiting. Once you reply in the comment section, I'll move forward. Thank you so much for the reply. So let's get started. Before I start the discussion, guys, if you want to download the PDF of this session, the PDF of this session is available on my Telegram channel, and the handle of Telegram channel is @Madhav. Even you can search the Telegram channel by the name Economics by Madhav, and even you can scan the code which is available on the screen. So here we go with the first news of the evening. But before I start the discussion, I have a question for you. First, let's check out the question. If you are able to answer, it's fine. Otherwise, we will be discussing this question in much detail and then we'll come back and answer the question again. So what does the question say? The question says, what is the overall exposure limit of urban cooperative banks to housing, real estate and commercial real estate advances as suggested in the new prudential norms for the urban cooperative banks? So let's check out what is this new news all about. So firstly, I would like to start my discussion with the term that recently RBI has released the new prudential norms for urban cooperative banks, and these prudential norms need to be followed by the urban cooperative banks in the upcoming years to go, so that urban cooperative banks, they become stronger and they become adequate to compete with the other scheduled commercial banks in the country. So let's get started. Let's try to discuss this entire part in much detail. But before I start the discussion, just pay attention and try to understand each and every point. So the point says, Reserve Bank of India has introduced new prudential norms for urban cooperative banks to enhance their financial health. So why these prudential norms have been introduced? So these prudential norms have been introduced in order to enhance the financial health, as well as to provide greater freedom in terms of lending to the urban cooperative banks. So urban cooperative banks, they generally remain in news due to a number of reasons. So again, they are in news this time, and the reason behind this time is RBI has come up with the new prudential norms for these urban cooperative banks. The news which we are talking about, it is related to the new prudential norms, and these new prudential norms are effective from 25th of February 2025, and it has recently modified the areas related to the urban cooperative banks. So what all areas are modified? Sir, first term, small value loans related to urban cooperative banks have been modified. Exposure to real estate has been modified, and lastly, provisioning for security receipts have been modified by RBI in the recent times. Now, what all these updates are, what changes have been done, and what will be the impact of these changes in the near future to go, let's try to decode all of them. So the first point is amendment in the definition of small value loans. If someone asks me, what do you understand by the term small value loan, then my answer would be, so small value loan basically depends upon what? So small value loans basically depend upon
the value of loan which has been provided, and this small value loan is different for different organizations. It is different for different authorities. Now keeping the same in mind, if I explain this point to you in much detailed manner, then what will be my answer on the same? So my answer on the same point would be, whenever we talk about small loan, you need to understand this point very carefully, that if someone asks you what is a small value loan, with respect to urban cooperative banks. So earlier the condition was very obvious. The condition says if the loan amount given by urban cooperative bank is up to 25 lakhs, then it will be termed as small value loan, or please pay attention, or as a certain percentage of your capital, So here you can see urban cooperative banks, they say loan of value not more than 25 lakhs. So if the loan of value is not more than 25 lakhs, that will be termed as small value loan, or on the other side, we have a criteria. The criteria says 0.2% of what? So 0.2% of what? So 0.2% of their tier 1 capital. 0.2% of what? So 0.2% of tier 1 capital. So see, please pay attention. Small value of loan given by urban cooperative banks is defined as either up to 25 lakhs as a value of loan, or 0.2% of tier 1 capital. 0.2% of tier 1 capital. Now let's take an example. If the tier 1 capital is, let's say 100 crores. If I just take an example, and if I say that the tier 1 capital is 100 crores, I'm talking about urban cooperative bank, and in the case of urban cooperative bank which I am discussing right now, if I assume that the tier 1 capital is 100 crores, so what will be the 0.2%? So 0.2% will be 0.2 divided by 100, and if I remove this decimal, it comes out to be something like this. And if I try to solve this, it gives me 0.2 crore, which means 20 lakhs. Now in this case, we should go with the lower value or upper value. Please pay attention. So out of the two, you go with the upper value. Out of the two, we will choose the upper value, or we will choose the maximum value. So what is the maximum value? 25 lakhs or 20 lakhs? Then my answer is, sir, 25 lakhs is the maximum value. So in that particular case, small value loan given by urban cooperative banks is going to be 25 lakhs. If I change my example, and if I say tier 1 capital, is 1000 crore. If I assume that tier 1 capital for the bank is 1000 crore, in that particular case, what will be 0.2%? So in that particular case, 0.2% of tier 1 capital, which is 1000 crore, is going to be 2 crore. It's going to be 2 crore. So in that particular scenario, on one side, up to 25 lakhs, on the other side, up to 2 crores, you need to choose the maximum value. So what will be the loan given? 25 lakhs or 2 crores? Then my answer would be, sir, my answer is 1 crore. Neither 2, neither 25 lakhs. My answer will be 1 crore. Why? Because the condition says up to 25 lakhs or 0.2% of tier 1 capital up to 1 crore. So what was the maximum limit? So maximum limit is 1 crore. Either this or this. So this is the current urban cooperative bank norm, and on the urban cooperative banks, there is a condition that out of the total advances given by these urban cooperative banks, 50% of the advances, 50% of total loan and advances should be given to what? So should be given in the category of small value loan. समझ आई ये बात? अरे बोलो यार, ये पॉइंट समझ आया? अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि स्मॉल वैल्यू लोन क्या है, तो आप आंसर क्या दोगे? सर, स्मॉल वैल्यू लोन का मतलब है
लोन की वैल्यू कितनी हो, 25 लाख हो या उससे कम। अगर लोन की वैल्यू 25 लाख या उससे कम है वो स्मॉल वैल्यू लोन है इन केस ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, या फिर लोन की वैल्यू 0.2% ऑफ टीयर 1 कैपिटल हो, 0.2% ऑफ टीयर 1 कैपिटल हो, किसका, आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का। अब इन दोनों में से जो वैल्यू हाईएस्ट होगी वो आप चूज करोगे। अगर ये वैल्यू 25 लाख से कम है देन योर स्मॉल लोन विल बी अप टू 25 लाख। अगर ये वैल्यू 25 लाख से बड़ी, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, देन यू विल गो विद दिस। द मोमेंट वैल्यू इंक्रीजेस अबव 1 करोड़, योर लिमिट इज 1 करोड़ ओनली। यू कैन नॉट प्रोवाइड लोन ग्रेटर देन 1 करोड़। समझ आया कि सर एक तरफ 25 लाख, एक तरफ 1 करोड़, इन दोनों में क्या रिलेशन है। सब 25 लाख इज द जनरल वैल्यू, 1 करोड़ की वैल्यू कब पिक्चर में आएगी, व्हेन 0.2% ऑफ टीयर 1 कैपिटल इज अबव 1 करोड़। अगर 0.2% ऑफ टीयर 1 कैपिटल 25 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम है तो उतनी वैल्यू का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या देंगे, लोन देंगे। अब जो किसी ने पूछा कमेंट सेक्शन 50% का मतलब, सर 50% का मतलब है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे आर रिक्वायर्ड, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स they are required to provide at least 50% of their total loans and advances, 50% of their total loans and advances in the category of small value loan। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के, अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने 30 लोन दिए तो उस 30 में से कम 15 लोन कौन सी कैटेगरी के लोन होने चाहिए, सर कम से कम 15 लोन होने चाहिए स्मॉल वैल्यू लोन कैटेगरी। ठीक है जी, क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब यहां पर एक स्टेटमेंट और आ रही है, सर बाय 31 मार्च 2026, इस पे जाना चाहूंगा, इस पॉइंट को आपको क्लियर करना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर रिगार्डिंग द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अगर हमसे कोई पूछे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए व्हाट आर द करंट कंडीशंस, सर द करंट कंडीशंस आर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक शुड प्रोवाइड 50% ऑफ देयर टोटल लोन in the category of small value loan. And what is small value loan? So small value loan is the loan which is up to 25 lakhs or up to 25 lakhs or 0.2% of tier 1 capital, whichever is more, but upper limit is up to 1 crore. Upper limit is up to 1 crore. ये कहानी है अभी तक। इसमें आरबीआई ने रिसेंटली एक नॉर्म दी थी और वो रिसेंट नॉर्म जो आरबीआई ने दी वो क्या थी सर? अकॉर्डिंग टू दी आरबीआई रिसेंट नॉर्म जो दिया गया था जुलाई 2024 में, उसमें ये कहा गया था कि बैंक्स जो है दे शुड अटेन द वैल्यू की जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है दे शुड प्रोवाइड 50% ऑफ देयर टोटल लोन इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल वैल्यू लोन्स। बट फिर इसे एक्सटेंड किया गया। नाउ द कंडीशन इज बाय 31 मार्च 2025 40% किसमें होना चाहिए? टोटल लोन का 40% क्या हो? दैट शुड बी स्मॉल वैल्यू लोन। लेकिन बाय 31 मार्च 2026 इट शुड बी व्हाट सर? इट शुड बी 50%। इट शुड बी व्हाट सर? इट शुड बी 50%। एंड जो डेफिनेशन है दैट हैज बीन गिवन अर्लियर। जो डेडलाइन थी वो कितनी थी सर? पहले की जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च 2024 थी, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे वर नॉट इन द पोजीशन टू अचीव इट। तो आरबीआई के पास रिक्वेस्ट गई, आरबीआई ने उस रिक्वेस्ट को मॉनिटर किया और मॉनिटर करने के बाद आरबीआई ने कहा कोई टेंशन नहीं है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अब आप पहले 40% ऑफ द टोटल लोन स्मॉल लोन कैटेगरी में दीजिए बाय 31 मार्च 2025, लेकिन 31 मार्च 2026 तक आपके टोटल लोन में से 50% लोन कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए? दैट शुड बी इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल वैल्यू लोन। दिस इज व्हाट विच इज गोइंग ऑन। दिस इज व्हाट विच इज गोइंग ऑन। अब क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट चेंजेस हैव बीन डन, व्हाट रिवीजन हैज बीन डन? If I talk about the revision has been made to the definition of small value loans. अब ये जो small value loans है इनकी definition को change किया गया। If I talk about the change in this definition, what is the new definition which has been given? The new definition says loan value should not be more than 25 lakhs or 0.4% of tier 1 capital, whichever is higher, but the ceiling is 3 crore per borrower. Whichever is higher, but the ceiling is 3 crore per borrower. So if I include the update over here, so what is the update? Updates are this 25 lakhs is still the same. That small value loan means loan up to 25 lakhs, but this has been revised. Now this has been increased to 0.4% of tier 1 capital. 0.4% of tier 1 capital and up to 3 crore per borrower is the limit.
up to 3 crore per borrower is the limit, and you have to, urban cooperative banks have to achieve the target of 50% of total loan should be small वैल्यू लोन बाय 2026 और 40% का टारगेट है जो इन बैंक्स को अचीव करना बाय 31 मार्च 2025. आई गेस द फर्स्ट न्यूज, द फर्स्ट अपडेट इज क्लियर टू एवरीवन. अगर पहली न्यूज, पहली अपडेट बिल्कुल क्लियर है तो एक बार यस सर टाइप कर दो सो दैट आई कैन मूव अहेड. तो ध्यान दीजिएगा, ऑल अदर कंडीशंस, जो भी बाकी सारी कंडीशंस थी, दे आर स्टिल द सेम, नो चेंजेस हैज बीन डन. And urban cooperative banks, they should periodically review the portfolio behavior and quality under the loan size category and where necessary may consider the fixing lower ceilings. तो यहाँ पे ये कहा गया कि भैया रिव्यू करते रहिए टाइम टू टाइम और जब आपको लगे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है चेंज कर लीजिए so that you can achieve the targets by 31st March 2025 or you can achieve the targets by 31st March 2026. पहली कंडीशन I guess clear होगी. First condition is related to what? So first condition is related to the small value loan related to urban cooperative banks. Now let's move on to the second condition. Second condition जो है या जो second revision है, second revision is related to the housing finance. पहले पढ़ते हैं कि current situation क्या है. Urban cooperative banks, they have been given more flexibility related to the housing loan as well as real estate lendings. The overall exposure, please pay attention. Current जो सिनेरियो है, अभी जो है रिवीजन करने से पहले जो करंट सिनेरियो है वो क्या कहता है? The overall exposure of urban cooperative banks. तो urban cooperative banks, they should provide loan to housing sector, real estate as well as commercial real estate advances, but there is a limit. So what is the limit? So the limit is 10% of the total asset. So 10% of the bank's total asset should be used to provide loan to the housing sector, real estate sector and commercial sector. और उसके साथ साथ जैसे वो कहते हैं ना कि एज रिलैक्सेशन, उसी तरह यहां पर एक रिलैक्सेशन दी गई है. वो रिलैक्सेशन कितनी कि 5% ऑफ टोटल एसेट आप और दे सकते हैं इन द कैटेगरी ऑफ हाउसिंग लोन. बट कब? व्हेन यू आर लेंडिंग फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर. When you are lending for the priority sector. I'm pretty sure आप सब जानते हैं priority sector lending क्या है. So priority sector lending has been introduced by RBI, under which RBI has asked the banks to provide certain percentage of fixed loan to the priority sector lending. For example, अगर मैं कहूँ for public sector bank, this limit is 40%. For private banks, limit is 40%. For foreign banks, 40% of A and BC, adjusted net bank credit, should be provided loan or should be provided in the form of lending to the priority sector. I hope ये बात आपको पता है. उसके अलावा अगर हम RRBs की बात करें और हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें तो उसके लिए ये जो लिमिट है दैट इज 75% ऑफ A and BC. प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वी इंक्लूड डिफरेंट सेक्टर्स सच एज वी हैव एग्रीकल्चर सेक्टर, then we have MSME sector. Along with MSME we include startups. In MSME we also include the export sector, that is the MSMEs involved in export import. Then we include weaker section, then we include housing loan, education loan, social infrastructure lending, green energy infrastructure. These all are included or these are the categories under priority sector. लेकिन इन कैटेगरीज में भी फर्दर लिमिट है. ऐसा नहीं कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए लोन चाहिए दैट विल बी गिवन ओनली इन द प्रायोरिटी सेक्टर. नो, देयर इज अ सर्टेन लिमिट एंड इफ यू वांट टू बोरो लोन अबव दैट लिमिट दैट विल बी गिवन अंडर द कमर्शियल सेक्टर. सेम गोज फॉर I would say housing loan, same goes for education loan. Education loan के केस में अगर आप एजुकेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर में लेते हो तो उसकी लिमिट है 20 लाख. अगर 20 लाख से ज्यादा एजुकेशन लोन चाहिए दैट विल बी अंडर द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल सेक्टर. सिमिलरली इन केस ऑफ होम लोन देयर इज अ लिमिट. और होम लोन के केस में लिमिट क्या है? सब प्रायोरिटी सेक्टर में जो लिमिट है दैट इज अप टू 35 लाख. अगर आप घर बना रहे हैं कहां सर? अगर आप घर बना रहे हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी मेट्रो सिटी में, और अगर आप घर बना रहे हैं किसी अर्बन एरिया में तो आपको जो लोन मिलेगा वो कितना होगा, या अदर देन मेट्रो सिटी कितना होगा? 25 लाख रुपए. लेकिन यहां पर एक लिमिट है. वो लिमिट क्या? द लोन लिमिट इन बोथ दीज केसेस इज सेट 45 एंड 30 लाख रिस्पेक्टिवली. यानी कि यहां पर जो आपको लोन मिलेगा कंस्ट्रक्शन के लिए
या फिर आप ये कहें कि यू हैव अ लैंड बट यू वांट टू मेक अ कंस्ट्रक्शन, और अगर आपको पूरी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी के ऊपर का जो वैल्यू है दैट इज डिसाइडेड कि मेट्रो सिटी में अगर प्रॉपर्टी वैल्यू इज 45 lakhs देन यू कैन बोरो अ लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड द लोन वैल्यू इज 35, और अगर आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन इज 30 lakhs देन यू कैन बोरो अप टिल 25 lakhs इन द कैटेगरी ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। अगर इससे ज्यादा वैल्यू का लोन चाहिए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन कौन सी कैटेगरी में मिलेगा सर, दैट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ कमर्शियल सेक्टर। ठीक है जी, अब वापस चलो, दोबारा सुन लो करंट सिनेरियो क्या है। करंट सिनेरियो ये कहता है कि जो हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो रियल एस्टेट को या हाउसिंग सेक्टर में जो लोन प्रोवाइड करेंगे, रियल एस्टेट सेक्टर में जो लोन देंगे, रियल एस्टेट दो तरह से दिया है, एक रियल एस्टेट है, कमर्शियल रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट अगर मैं जनरल बात करूं तो रियल एस्टेट जनरल का मतलब ये हुआ कि मान लो एक छोटा बिल्डर है, वो एक बिल्डिंग बनाना चाहता है, फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर वी कॉल इट एज रियल एस्टेट, जहां पे वो 4 फ्लोर्स बनाएगा और 4 फ्लोर्स को बेचेगा एंड एवरीवन विल बी परचेजिंग अ सेपरेट फ्लोर एंड दे विल बी लिविंग देयर। बट कमर्शियल रियल एस्टेट का मतलब देयर इज अ इंडिविजुअल, देयर इज अ प्लेयर हु इज गोइंग टू इन्वेस्ट टू कंस्ट्रक्ट ह्यूज बिल्डिंग्स जहां पे ऑफिसर्स को सेटअप किया जाएगा, दैट इज बेसिकली अ कमर्शियल रियल एस्टेट। तो उन सब के लिए जो टोटल लेंडिंग होगी वो कितनी होगी, 10% ऑफ द टोटल असेट वैल्यू, और 5% का एडिशनल आपको रिलैक्सेशन दिया गया अगर आप लोन देते हैं, किसको, हाउसिंग लोन या हाउसिंग एडवांसेस देते हैं, किस कैटेगरी में, प्रायोरिटी सेक्टर की कैटेगरी में। अब यहां पर क्या चेंजेस किए गए वो समझ लो जरा। उन चेंजेस पे आने से पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना होगा, वो क्या सर, यहां पे एग्रीगेट कैपिंग भी है, और वो सीलिंग क्या कहती है, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन कितना दिया जाएगा सर, 60 लाख पर इंडिविजुअल for tier 1 urban cooperative banks और 140 lakhs per individual borrower for all the other urban cooperative banks। तो पहले तो आपको मैंने बता दिया ओवरऑल लिमिट, फिर मैंने आपको बताया पर बोरोवर लिमिट 60 lakhs एंड 140 lakhs। यहां पे टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक किसे कहते हैं सर, टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसका डिपॉजिट अप टू 100 crores है। एज डिपॉजिट इंक्रीजेस, if the deposit is 100 to 1000 crore tier 2, deposit is 1000 to 10,000 crores tier 3, और अगर आपका deposit is greater than 10,000 crore then it will be termed as tier 4 urban cooperative bank। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि सर चेंजेस क्या किए जाएंगे। सर चेंजेस ये है कि aggregate exposure of urban cooperative banks to the residential mortgage यानी कि हाउसिंग लोन जो दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखो, रेजिडेंशियल मॉर्टगेज के लिए कंडीशन क्या है कि जो आप हाउसिंग लोन दे रहे हैं किसी इंडिविजुअल को, और वो भी अदर देन दोज हु आर एलिजिबल एंड अदर देन दोज हु आर क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर, दिस शैल नॉट इंक्रीज 25% ऑफ इट्स टोटल लोन एंड एडवांसेस, 25% ऑफ टोटल लोन एंड एडवांसेस। और जो हमारा एग्रीगेट एक्सपोजर है ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, एग्रीगेट एक्सपोजर है ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का टू रियल एस्टेट सेक्टर एक्सक्लूडिंग द हाउसिंग लोन टू द इंडिविजुअल शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल लोन एंड एडवांसेस, शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल लोन एंड एडवांसेस। तो यहां पे पहला जो पॉइंट आया वो क्या कि सर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हाउसिंग लोन देंगे इंडिविजुअल्स को, वो हाउसिंग लोन कितना हो सकता है सर, दैट कुड बी 25% ऑफ टोटल, 25% ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांसेस, 25% ऑफ टोटल लोन एंड एडवांसेस। और अगर हम बात करें रियल एस्टेट के लिए, तो रियल एस्टेट के लिए एडिशनल है हाउसिंग लोन के अलावा कितना परसेंट, 5% ऑफ टोटल लोन एंड एडवांसेस, 5% ऑफ टोटल लोन एंड एडवांसेस। तो ये रीसेंट चेंज किया गया। दूसरा चेंज जो इस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की नॉर्म्स में किया गया, वो दूसरा चेंज किस पर है सर, वैल्यू पे चेंज है। टियर 1 के लिए 60 lakhs, इट्स स्टिल 60 lakhs। टियर 2 बैंक्स के लिए 140 lakhs, इट्स स्टिल 140 lakhs। लेकिन पहले टियर 2, टियर 3, टियर 4 सभी के लिए 140 lakhs था, लेकिन अब उस 140 lakhs को टियर 3 के लिए लिमिट कर दी कितनी, 2 करोड़। टियर 4 के लिए लिमिट कितनी है, 3 करोड़। यानी टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अब जो हाउसिंग लोन किसी इंडिविजुअल को देगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 3 करोड़ हो सकता है, जो कि पहले कितना था, 1.40 करोड़, जो कि पहले कितना था, 1.40 करोड़। ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया।
ठीक है जी, क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आ गया? अगर क्लियर है, समझ आ गया तो एक बार यस सर टाइप कर दो सो दैट वी कैन मूव अहेड। इसको अगर आप कंक्लूड करना चाहें तो आई कैन कंक्लूड इट फॉर यू। मैं कंक्लूजन दे देता हूं, इसमें जो जो चीजें आपको याद रखनी होंगी ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहली चीज सर, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर पहले कंडीशन ये थी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हाउसिंग लोन दे रहे हैं या जो रियल एस्टेट को लोन दे रहे हैं या फिर जो कमर्शियल रियल एस्टेट में लोन दे रहे हैं, उनकी वैल्यू कितनी होगी सर? उसकी लिमिट है अप टू 10% ऑफ बैंक का टोटल एसेट, 10% ऑफ बैंक का टोटल एसेट। और इसमें 5% एडिशनल अलाउड था इन केस ऑफ होम लोन, जो कि किसे दिया जा रहा था? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। उसके साथ साथ टीयर 1 और टीयर 2 टू टीयर 4 जो लेंडिंग लिमिट है सर, वो है अप टू 60 लाख रुपीस पर इंडिविजुअल। और यहां जो लिमिट थी अप टू 1.40 करोड़, ये लिमिट थी। अब इसको रिवाइज किया गया। अब रिवाइज करके क्या चेंजेस किए गए ध्यान देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में साथ साथ आंसर देना। तो यहां पर अगर मुझसे कोई कहे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए अब चेंजेस क्या हुए, सर चेंजेस ये हुए हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए होम लोन की कैटेगरी अलग कर दी रियल एस्टेट से। और उन्होंने कहा होम लोन के लिए जो इंडिविजुअल को दिया जा रहा है उसकी लिमिट हो गई 25% ऑफ टोटल, 25% ऑफ टोटल लोन एंड एडवांसेस। और रियल एस्टेट के लिए वैल्यू कितनी है? 5% ऑफ टोटल लोन एंड एडवांसेस। और याद रखिएगा यहां पर जो आपका प्रायोरिटी सेक्टर वाला है दैट इज एडिशनल, प्रायोरिटी सेक्टर इज एडिशनल, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, दैट इज एडिशनल, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा। और दूसरा जो चेंज किया गया वो क्या? रियल एस्टेट के लिए इसकी लिमिट कर दी 5%। अब अगर हम बात करें टीयर 1, सर टीयर 1 के लिए जो पर बोरोवर लिमिट है दैट इज स्टिल अप टू 60 लाख। टीयर 2 के लिए जो लिमिट है दैट इज अप टू 1.40 करोड़। लेकिन टीयर 3 और टीयर 4 के लिए इस लिमिट को रिवाइज कर दिया। सर अगर मैं टीयर 3 की बात करूं तो टीयर 3 के केस में ये लिमिट बढ़कर कितनी हो गई सर? दिस हैज बीन इंक्रीज टू अप टू 2 करोड़ पर बोरोवर। और टीयर 4 के लिए कितनी हो गई? अप टू 3 करोड़ पर बोरोवर। उम्मीद करता हूं चीजें याद रहेंगी। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो आप आंसर कर पाओगे। इफ दैट इज अ सिचुएशन जस्ट गिव मी यस सर सो दैट आई कैन मूव अहेड। आई एश्योर यू कि अगर ये सेशन ध्यान से देखा तो छप जाएंगी चीजें, घर जाकर एक बार रिवाइज करोगे चीजें एग्जामिनेशन तक याद रहेंगी अगर इस तरह से चीजों को आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब अगले पॉइंट पे बढ़ता है। अगला पॉइंट थोड़ा टफ है, अगला पॉइंट थोड़ा टफ है। इट रिक्वायर्स योर पेशेंस ताकि आप इस पॉइंट को समझ सके। इस पॉइंट को समझाने से पहले, इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको यह समझा देता हूं स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है जिसपे हम बात करने वाले हैं। ध्यान देना, एक एक चीज को समझते जाना। जहां आपको लगे कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे प्लीज पॉइंट आउट कीजिएगा, रोक लीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन द सेम टू यू, डोंट वरी। ठीक है, ध्यान दीजिए। आपने एआरसी के बारे में जरूर सुना होगा, दैट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि बनाई गई है अंडर सेक्शन 3 ऑफ सारफेसी एक्ट 2003, जिसका काम क्या है सर? सारफेसी एक्ट 2003 के तहत एजेंडा था टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ रिकवरी ऑफ लोन, एंड दैट इज द रीजन ARCs वर इंट्रोड्यूस्ड एंड ARCs वर रिस्पॉन्सिबल टू परचेज द बैंक्स NPA एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। याद होगा, आई होप यू नो। इफ यू नो ARC जस्ट गिव मी ARC लिख दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। अब ध्यान से एक स्टोरी सुनिएगा। देयर इज एन इंडिविजुअल नेम्ड X, ठीक है, X एक इंडिविजुअल है। उस X इंडिविजुअल ने बैंक से लोन लिया, उस बैंक का नाम है SBI, और SBI से एक लैंड गिरवी रख के लोन लिया गया, और लोन की वैल्यू थी लेट्स से 10 करोड़ रुपए। लोन की वैल्यू थी लेट्स से 10 करोड़ रुपए, या लेट्स से लोन की वैल्यू है 1 CR। ये आपका क्या हो गया सर? दिस इज योर कोलेट्रल। ये आपका क्या हो गया? दिस इज योर कोलेट्रल। ठीक है जी, डन है ना? अब क्या हुआ कि बैंक का ये जो लोन है, ये लोन डिक्लेयर हो गया NPA। अब जैसे ये लोन NPA डिक्लेयर हुआ तो एक स्टेप तो ये बनता है कि बैंक शुड इन्वॉल्व इटसेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। तो बैंक प्रोसेस ऑफ रिकवरी इनिशिएट करे, फिर अगर जरूरत पड़े तो DRT के पास जाए, DRT के पास जाने के बाद इस एसेट को
BAANK पर रजिस्टर करे और फिर जाकर ऑक्शन हो, ऑक्शन होने के बाद रिकवरी हो, ये सारी चीजें कर सकता है बैंक। लेकिन जब बैंक ने देखा कि ये सारी चीजें करने में बैंक का काफी टाइम वेस्ट होगा, और अगर आज बैंक ये सारी चीजें करता भी है तो बैंक इज एक्सपेक्टिंग, बैंक जो एक्सपेक्ट कर रहा है रिटर्न, बैंक इज एक्सपेक्टिंग रिटर्न ऑफ, बैंक इज एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ लेट्स से 50 लाख रुपीस, बैंक इज एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न ऑफ 50 लाख रुपीस। इतनी देर में बैंक के पास एक कंपनी आई, उस कंपनी का नाम था ARC, और वो SBI के पास आई और उसने SBI से कहा कि सर हम ARC है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज है, हमारा बिजनेस ही ये है कि हम आपसे क्या करेंगे, आपके NPA को परचेज करेंगे, हम आपके NPA को क्या करेंगे, परचेज करेंगे, और उस NPA को परचेज करने के बदले में विल पे यू द अमाउंट, विल पे यू दी अमाउंट। तो आज SBI ने कहा ठीक है सर, ये NPA है, इसकी ये कोलेट्रल है, ये लैंड बेच लो, पैसा रिकवर हो जाएगा, 50 लाख रुपए रिकवर हो रहे हैं, मैं तो कर पा रहा हूं, आप देख लो कितना पैसा दोगे। ARC ने कहा सर आप टेंशन मत लो, वी आर रेडी टू पे यू 55 लाख, वी आर रेडी टू पे यू 55 लाख। अब आप सोच रहे होंगे कि ARC 55 लाख रुपए कहां से देगा, तो ARC के पास प्लान्स है। ARC को पता है कि ये जो लैंड है ना, कोलेट्रल है, ये जो लैंड है, ये जो कोलेट्रल है, इसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, और नियर फ्यूचर में, नियर फ्यूचर का मतलब 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर अंदर सर ये जो नियर फ्यूचर है, इस नियर फ्यूचर में इस लैंड की वैल्यू लगभग 1.5 से 2 करोड़ होगी, या ज्यादा हो गया ना, इस लैंड की वैल्यू लगभग 1 से 1.5 करोड़ होगी, और बड़े आराम से ना चाहते हुए भी जो रिकवरी है वो लगभग ऑन एन एवरेज लेट्स अज्यूम कि 90 लाख की तो हो ही जाएगी। तो यहां पर जो एक्सपेक्टेशंस है, ARC क्या एक्सपेक्ट कर रहा है सर, ARC इज एक्सपेक्टिंग कि ये जो लैंड है ये मरे दर्जे पर कितने का होगा, 90 लाख रुपए का होगा। ये तो ब्रॉड एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन बेयर मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है कि नियर फ्यूचर में ये जो बैंक है, ये जो लैंड है, ये लैंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 लाख रुपए। बैंक ने कहा जो मर्जी करो, मुझे 55 लाख रुपए दो, अपना एंजॉय करो। ठीक, ये सारी सिचुएशन आपके सामने बन गई। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, इन दिस करंट सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग सर, इन दिस करंट सिचुएशन बैंक केम इनटू द पिक्चर एंड ARC केम इनटू द पिक्चर एंड ARC सेड दैट सर वी आर रेडी टू पे यू 55 lakhs, बट दीज 55 लाख रुपीस को हमें अरेंज करना होगा, वी नीड सम टाइम, हमें अरेंज करना होगा, वी नीड सम टाइम। तब ARC ने क्या किया, ARC ने इस कोलेट्रल के बदले में, ये जो लैंड है, ये जो कोलेट्रल है, इस कोलेट्रल के बदले में क्या इशू किया सर, इशू किए सिक्योरिटी रिसीट्स, इशू किए क्या, सिक्योरिटी रिसीट्स। ये कहा ARC ने बड़े बड़े बैंक्स को, बड़े बड़े क्वालिफाइड बायर्स को, ओनली क्वालिफाइड बायर्स आर अलाउड, तो क्वालिफाइड बायर्स को इशू की गई ये सिक्योरिटी रिसीट्स। उन्होंने कहा गया कि सर ये 90 लाख रुपए का लैंड है, जो कि अगले 6 महीने 8 महीने में 90 लाख रुपए का होगा, आज 55 लाख रुपए का है, मैं इसके बदले में आई एम रेडी टू इशू 55 सिक्योरिटी रिसीट्स एंड 1 सिक्योरिटी रिसीट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 लाख रुपीज, और परचेज दिस सिक्योरिटी रिसीट इन द नियर फ्यूचर व्हेन आई विल सेल दिस लैंड, आई विल पे यू 9 लाख, आई विल पे यू 90 लाख अगेंस्ट दैट 55 लाख रुपीज। तो ये सारी सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे बैंक्स ने, इस सारी सिचुएशन को देखते हुए बहुत सारे बैंक्स ने क्या किया, इन सिक्योरिटी रिसीट्स को परचेज करना शुरू कर दिया। बात समझ आई, बात समझ आई। और इस सिक्योरिटी रिसीट से जो कैश रेज हुआ वो कैश पे कर दिया SBI को, SBI खुश, ARC वेट कर रहा है, और 90 लाख रुपए का जब लैंड होगा, लैंड बेच दिया जाएगा, और उस सिक्योरिटी रिसीट से जिसने जितना पैसा दिया था उतना हिस्सा 90 लाख के अकॉर्डिंग उनको दे दिया जाएगा, और उनको भी क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब वो NBFCs भी हो सकती हैं, बैंक्स भी हो सकते हैं, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या कि सर ये जो आपने एक्सपेक्ट किया है, ये एक्सपेक्टेशंस है, और ये एक्सपेक्टेशंस रिस्की एक्सपेक्टेशंस है, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, तो यहां पे रिस्क इन्वॉल्व है। इसीलिए RBI कहता है कि सिक्योरिटी रिसीट्स कैन बी परचेज्ड अगेंस्ट द कोलेट्रल only and only by the qualified buyers। ठीक है, पॉइंट समझ आया, पॉइंट समझ आया।
Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? So I'll just repeat it again. What I'm trying to say is, sir, whenever a bank loan is declared as NPA, in that particular scenario, if bank do not want to waste its resources in recovering the loan, bank can sell its NPA to ARC, and ARC is ready to purchase the NPAs at a set value. But ARC is a company. ARC will be getting the funds. ARC will be receiving the funds at when they will be selling that collateral. Right now they don't possess the cash. Right now they don't possess the funds. So what they do is, once they purchase the NPA, against this NPA, or I would say the collateral against this NPA, is expected to grow. It is expected to grow, and we are expecting that its price will increase from current 55 lakh market price to 90 lakh rupees. So it's better. Let's raise funds. Let's borrow funds. Let's ask investors to invest in this land today at 55 lakhs and assure them, if you are investing today at a point of 55 lakhs, we will be giving you back 90 lakhs in the near future, because we are expecting that this land will be sold out at 90 lakhs in near future. So you just have to wait for an year or so. For that particular time, you just invest amount, I would say, the adequate amount you want to, and against that adequate amount you have invested, you will be getting the return, which is going to be 90 lakhs. And this instrument, which is issued against the collateral of the NPA, against which the funds have been raised from the qualified buyers, is known as security receipts. And against the security receipts, funds will be arranged by ARC, and ARC will be paying that fund to SBI. And all other banks who all have purchased these security receipts, they have the ownership in that collateral land. And when ARC will sell that collateral land, when ARC will receive 90 lakhs, that 90 lakhs will be distributed among the investors of security receipts. Is it clear now? Is it clear now? I have explained it in both Hindi as well as in English. But these security receipts, so they are risky instruments, and if they are risky instruments, related to this, we have an update with Urban Cooperative Bank. So please pay attention what I'm trying to say. Now read out the news over here. The news says, according to the Master Direction on Transfer of Loan Exposure dated back in September 2021, urban cooperative banks need to provide for the valuation differential on the security receipts held against the assets transferred by them to ARCs, held against the assets transferred by them against the asset transferred by them to the ARCs. In this regard, 5-year glide path till 2025-26 was provided. So what does this basically means? So now the same example which I have taken, now urban cooperative banks, they have transferred their NPAs to the ARCs, and against those transfer of funds done to the transfer of a loan done to the ARC, and ARC has issued these security receipts to the banks, Urban Cooperative Bank has purchased those security receipts as well. Urban Cooperative Bank also wants to earn profit, so they have also purchased these security receipts. Now the urban cooperative banks, they have purchased these security receipts, but there is a criteria related to the security receipt. The first criteria is, sir, these security receipts, they are risky, as I mentioned earlier. They are risky assets, as I mentioned earlier. Therefore, as per RBI norms, certain provisioning is need to be done. I hope you all understand what is provisioning. Provisioning means the reserves we keep. In order to counter the loss in the near future. So against these security receipts, certain provisionings are maintained, and on the basis of this provisioning, we calculate net book value. So what is the net book value of these receipts? So net book value means purchase price. You have purchased the security receipts at whatever price. So I say security receipt purchase price, and from the purchase price you subtract what value? Sir, you subtract the
provisioning value, and after you subtract the provisioning value, you get the net book value, and this net book value is the actual risk for the bank against these security receipts, because the bank has invested the funds in a risky instrument, that is security receipts. This is one. Second is current value of security receipts. So the current value of security receipts basically means the current value of security receipt depending upon the market price of collateral. So you were expecting, as an ARC, you were expecting that the value of this collateral is going to increase. The value of this collateral, spelling is wrong, I hope you may have understood the word collateral, there was no space. So what has been happened? So current value is the value which is calculated on the basis of the market price of the land against which security receipts are issued, and net book value is the security receipts purchase price minus provisioning value. So what is this valuation differential? So the valuation differential is net book value minus current value of security receipts. So this is known as differential value. This is known as differential valuation. Just keep waiting for 2 more minutes. I'll conclude it, then it will be clear to you. Now let's read it again. As per the master direction in September 2021, RBI has asked the urban cooperative banks that they should provide valuation differential on the security receipts held against the asset transferred by them to the ARC. In this regard, 5-year time period was given. That means by 2025-26, urban cooperative banks, they need to maintain the reserves against these differential values as well in order to avoid the loss. But now in the recent update, RBI has said that we are reviewing it and we are extending the timeline, and this timeline has been extended by 2 years. That means you need to achieve this by financial year 2027-28. Let's conclude this. It will be clear to you. Don't worry. So we have a cooperative bank. And in a cooperative bank, this cooperative bank has purchased security receipts in the past. This cooperative bank has purchased a security receipt in the past, and the value of this security receipt is let's say 550 crores. This is the purchase price. And why the security receipt has been purchased by cooperative bank? Because cooperative bank wants to earn profit. कोऑपरेटिव बैंक को लग रहा है कि फ्यूचर में इस सिक्योरिटी रिसीट की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि कोलेटरल की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्यों ना आई शुड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी रिसीट टू अर्न प्रॉफिट. बट as we know that security receipts are they have good exposure, they have good value of exposure, they have good risk value attached to them. So against this, certain provisioning is maintained, and the provisioning which is maintained is equals to 500 crores. It is equals to 500 crores. From this, what we will calculate? So we will calculate the 550 crores. So provisioning is 50 crores, and if I calculate provisioning 50 crores, so the net book value of what? So the net book value of security receipt is equals to 500 crores. I hope till this point there is no doubt. This is on day one. Now, after some time, we know that these security receipts, they are going to mature after 2 years. Okay. But after 6 months, security receipts are not matured. ARC is not selling the land, but you have to review the price of the collateral, you have to review the price of security receipt. So when you reviewed the price of security receipt, you came to know that the current value of security receipt is even below the purchase price, which could obviously happen because of the risk attached to it. And if it is 400 crores,
if it is 400 crores and the security receipts are going to mature after 2 years, after 6 months, till the next review is done, till next review is done, till the time next review is done, Urban Cooperative Bank need to have a reserve, or need provisioning of what value? So the provisioning of value is required, that is 500 minus 400 crores, that is net book value minus current value. As per the example, this is 500 crores, this is 400 crores. So bank has to maintain a reserve of 100 crores or a provisioning of 100 crores against these security receipts. And this 100 crore is known as what? So it is known as differential valuation. Why differential valuation? Because this valuation is calculated after differentiating or after subtracting current value from the net book value. Basically, if banks were engaged in risky stuff like avoiding provisioning by converting NPAs to SRs, have been made to provision. Not the case, that is not exactly the same case, Ashima. What I'm trying to say is, if a bank has sold out their ARCs, so they have sold out their NPAs, and against the NPAs, they have purchased security receipts from the ARCs only, and they are expecting that these security receipts will pay higher returns in the near future, and against those security receipt investment, bank has already maintained the provisioning, and if I exclude that provisioning, it will give me the net book value. But security receipt is a risk related instrument, it's a market related instrument. You were expecting that its prices will increase after 2 years, but after 6 months the prices have not increased, and after 6 months when Urban Cooperative Bank is reviewing its security receipt price, at that particular moment they need to find out the differential value, and that differential value is need to be reserved. If let's suppose bank has already reserved 50 crores, then bank is not allowed to use this 50 crore, but to maintain 100% value, that is 100 crore as per the current example, now the deadline has been shifted from 25-26 to 27-28. So 2 more years have been given to achieve this deadline or to achieve this target. Is it clear now? I hope you have a good understanding now about the term that is security receipt, how ARCs they use security receipts to purchase bank NPAs, and why banks, why financial institutes, why NBFCs they purchase security receipts. They purchase security receipts with a motive of earning profit, because it is expected that security receipts are issued against the land or the collateral, and the land or the collateral against which these security receipts are issued, they are going to be valuated, or their value is going to be increased in the near future, and on that particular expectation, these security receipts they become a great investment opportunity for the qualified buyers. Is it clear now? If it is clear, just give me yes sir, so that we can move ahead. If it is clear, just give me yes sir, so that we can move ahead. I'm pretty sure that if you have heard to this discussion pretty carefully, you must have understood the things in much detail. And if it is clear, just give me yes sir. Chalo, badhiya. So I have a question related to the same, and the question is related to the same, that what is the overall exposure limit of urban cooperative banks to housing, real estate and commercial real estate advances as stated in the new prudential norms for the urban cooperative banks. So according to the new prudential norms of the urban cooperative banks, what were the limits? What were the exposure limits? What were the exposure limits to housing, real estate and commercial estate? Sir, the overall limits were 10%. Overall limits were 10% plus 5% additional in case of priority sector lending. 5% additional in case of priority sector lending. But now the revision has been done. In the revision, housing loan will be having a limit of 25%,
real estate will be having a limit of 5% of total loan and advances plus priority sector lending. So I hope the point is clear, question is clear, answer is clear. Let's move on to the next question. The next question says, according to the RBI report, by how much percent did the All India Housing Price Index increased in the third quarter of 2024-25? So recently RBI has presented the data on housing price, or I would say All India House Price Index. So let's quickly check this news and then we'll find out the answer for the same. So Reserve Bank of India has released its quarterly, it's released on quarterly basis, has released its quarterly house price index, and the base for this house price index is 2010-11, and what is the base value? That is 100. Now this house price index is released for the third quarter 2024-25 based on the transaction level data received from the registration authorities in 10 major cities. So it is based on the transaction level data which has been received from the registration authorities. That means your tehsils, where the registration of the land is done, where the ownership of the land is transferred under the revenue department. From there, information or the data is collected. So a time series data on all India and city-wise house price index are available at the bank's database. So you can go through this portal if you want to check out, and RBI has given this kind of flow which you need to remember, which you need to understand. So if I talk about the All India, House Price Index, as you can see, the All India House Price Index is recorded. It is recorded at what value? So it is recorded around 260 points in comparison to what, sir? Achha, that is the percentage. If I include over here on this basis, if you check out the value, for the current financial year, if you check out the value for the current quarter, it is around 310,315. So it is around this. And if I talk about the percentage, so the percentage value is this, which is around 3.1. So on the basis of this data, on the basis of this data collection which has been done by RBI, these are the things which you need to remember. All India House Price Index increased by 3.1%. It has increased by 3.1% on year-on-year basis in quarter 3, that is 2024-25, as compared to the growth rate of 4.3% in the previous quarter, and in the previous year growth rate was 3.8%. Annual house price index growth varied across the cities. It has ranged as high as 8.1% in Kolkata. So this could be a question. Name the city which has recorded highest house price index growth, that is Kolkata, and the lowest house price index growth out of the 10 cities is with Kanpur, that is 0.1%. And on the other side, if I check out house price index increased by 0.4%, it includes Mumbai, Bengaluru, Ahmedabad, Lucknow, and many other cities. Is it clear, everyone? So what all data you need to remember? So you need to remember this data, that for current quarter, increased value is 3.1% in comparison to the last quarter, which was 4.3%, in comparison to the previous year growth, that is 3.8%. Highest increase has been witnessed in Kolkata, lowest increase have been witnessed in Kanpur, but still in both the upper and lower limit, we have positive things. That means in both the cases, prices has increased, prices has not decreased, because both are positive. Last point which you need to remember is how many cities? So it includes 10 cities, and on the basis of this, what would be the answer? According to the RBI report, by how much percentage did the All India House Price Index increased in the third quarter? So it has increased by 3.1%. Last quarter, it has increased by 4.8%, and last year growth rate was 3.8%. Is it clear now? I hope each and every point is clear. And I will be sharing the PDF of this session on my Telegram channel itself. If you have any doubt, you can ask, please. I'm pretty sure the way we have discussed today's session, the point is clear to you.
the way we have understood three important facts related to urban cooperative banks. One is small value loan. Second point is loan value or limit related to housing loan as well as real estate and commercial real estate. And lastly, the most important one, security receipts. I hope all these areas which we have discussed are crystal clear to you, and I'm pretty sure you are going to enjoy, or you're going to enjoy the discussion in the near future as well. So that will be all from my side, guys. We'll catch you in the next session. But before I conclude, you need to give me an answer in the comment section. NARCL was set up in India to counter the bad loans. What was the targeted NPA resolution expected by NARCL? So when NARCL was set up, what was the targeted NPA value which country government was looking forward that the NARCL is going to resolve those NPAs with the country? It's in lakh crores. Just review it, check it out, and give me the answer in the comment section after watching this session. Good luck, guys. God bless you all. That will be all in this session. We'll catch you in the upcoming sessions to go. Till then, stay home, stay safe, and take care, guys. Good luck. Bye-bye.